under the aegis of Delhi-Mumbai Industrial Corridor. The DMIC is touted as country's imminent industrial development zone, which shall propel the country to become a global manufacturing and trading hub. Compared to other investment options available in surroundings of Ahmedabad and major cities of Gujarat, Dholera Smart City is the only place to be developed from scratch. It is the biggest planned urban development project in the world, spanning around 920 square kilometers with developable area of approximately 580 square kilometers, with all 6 draft TP schemes notified by government. Dholera SIR is slated for grandeur, becoming 6 times the size of Shanghai. Dholera SIR has best-in-class infrastructure facilities in the form of the biggest international cargo airport of the country, seaport, metro rail connectivity, 75 meters wide internal roads, amazing architectural buildings and much more. Proximity to mega cities like Ahmedabad, Vadodara, Rajkot and Bhavnagar. As an additional benefit, Dholera SIR is in proximate distance from Gujarat International Finance Tech City and Petrochemicals and Petroleum Investment Region. The SIR will be the hub to only non-pollutant industries like pharmaceuticals and biotechnology, automobile and auto ancillary industries, general manufacturing, agro and food processing, heavy engineering, electronics, high-tech and emerging technologies, metals and metallurgical products, tourism, IT and ITES, and education sector. The infrastructure and industrial development opportunities. Sewer pipes and storm water are pre-installed underground with the capability of handling growing demands of the city. A dynamic, intelligent traffic management system is planned to reduce emissions, enable rerouting and auto-detection of violations. An impressive transport hub with multifunctional zones will host parking. Part of the planning includes rooftop solar panels and add-on peripherals such as mobile recharging, charging points for electrical vehicles at public and private buildings, and various other facilities. In this city geared towards eco-friendly transportation, even the bus shelters are equipped with electric vehicle charging points, enabling smart public transportation. Water is the lifeline for any city to flourish, and a strong water source is essential for industries to thrive. Dholera's primary water source is the Narmada River through the Saurashtra Branch Canal, which ensures reliable and safe water 24/7 after treatment. Installation of sensors and SCADA technologies allows minimizing of losses and better usage management. Dholera has an inherent ability to manage and recycle waste. Water recycling through a smart wastewater system allows for 100% recyclability of domestic and industrial wastewater up to tertiary standards, and the smart stormwater management system saves, harvests and treats stormwater runoff, which ensures sustainability and creates a city water body to enhance quality of life. An integrated solid waste management facility is planned to handle all types of solid waste, like municipal solid waste, industrial solid waste, e-waste and biomedical waste, and will include waste-to-energy generation facility. Using technologies, this entire framework will be automated, making the process smarter and the city cleaner. A smart city needs to create and utilize smart power. To shape this vision into reality, Dholera will implement smart metering and monitoring to minimize losses and ensure a reliable power supply. Earning the smart tag, Dholera will focus on various forms of renewable energy by utilizing resources like solar and other sustainable modes. Dholera's design includes people-centric spaces and amenities along with smart infrastructure. Geared towards social and intellectual interaction, Dholera has dedicated spaces for basic amenities, including hospitals and fire stations, as well as spaces for awareness activities such as community halls and shopping centers, along with neighborhood, community and linear parks within walkable distances. From neighborhood-level farmers market to taxi and auto stands, from dedicated zones for hawkers to emergency services with quick response time, with education infrastructures to आगे भी उधर मतलब
यहाँ से 22 किलोमीटर दूर दरिया किनारा है। तो ये पूरा 15,000 हेक्टर में पूरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ रहा है, जिसमें कार्गो और पैसेंजर दोनों आ रहा है। और 2022 तक अगर ऐसे ही अच्छा चलता रहा तो 2022 तक यहाँ पे आप पहला प्लेन उठता हुआ देखोगे। 2022 एंड तक, ठीक है। तो मतलब चल तेरा भी फोटो आएगा, गड़बड़ मत। अभी ये जो लाइफ टाइम लोग याद करेंगे तेरा। हाँ, आज का तारीख मैंने वहाँ पे भी बोला था, आज भी बोल रहा हूँ, ठीक है ना। और डेट के साथ मैंने 10 साल पहले भी लोगों को यहाँ पे आता था, तो जो रोड से हम अंदर आए वहाँ से मैं बोलता था कि इस तरफ एयरपोर्ट आएगा ऐसे, है ना। और आज यहाँ पे लेके दिखा रहा हूँ सबको। सो कहने का मतलब क्या है, जो हमने कहा है उसी जगह पे वही चीजें आई हुई है। तो अभी आप सोच सकते हो कि इसका फ्यूचर क्या हो सकता है। सर आज का डेट क्या है? आज का डेट है 9/8/2018। ओके। जगह यहाँ से हम अंदर आए, ये पूरा गांव में जाता है ये रास्ता, ठीक है। यहाँ से हम अंदर जाएंगे। ये इसको थोड़ा एक साइड से हटाओ ना जीतू भाई। हाँ। आने गम्या थी एक साइड रस्तो थोड़ो करो। सर अंदर जाने की बोला जरूरत है। दादा यहाँ से क्या दिख हो रहा है गया? दिखेगा हाँ, यहाँ से दिख रहा है ना सर। अंदर से अंदर नहीं जाना है ना। हाँ, ऊपर चढ़ जाओ, ऊपर से ले लो, ऊपर से एक वीडियो ले लो ना ऐसे, जगह ही है ना अंदर। ठीक है। हाँ अंदर का। तो यहाँ पे जो इस तरफ आएगा पूरा एमिनिटीज आएगा कॉमन, जो हमने वीडियो में वॉक थ्रू में दिया हुआ है और हमारी वेबसाइट पे भी है, ठीक है। यहाँ क्लब हाउस आएगा उस तरफ कोने पे, ठीक है। ये अभी हमने यहाँ पे वो सीमेंट बीमेंट के लिए वो बनाया हुआ है, पानी का भी अभी बना दिया है। और टाकी ऊपर चढ़ के देख सकते हो जिसको देखना है। ये क्या होता है पूरा वो उधर का लिए क्या? इधर का पीछे वो जो है ना। हाँ हाँ